हेलो गाइस, दिस इज मैं शेख और आप निकोलॉजी देख रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं अपनी गाड़ी में क्या कर रही हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको निकोलॉजी के नए ऑफिस लेके जाने वाली हूँ। निकोलॉजी का वो ऑफिस जिसको बनाने में हमें ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। आई मीन डेकोर से लेकर सब कुछ सेटअप करते करते 2 महीने लगे। बट आज हमारी मेहनत रंग लेकर आई है और निकोलॉजी का ऑफिस फाइनली तैयार हो चुका है। इट्स अ संडे बट आई वांटेड टू टेक यू गाइस टू माय ऑफिस सो दैट यू कैन सी द ऑफिस एंड यू कैन सी कि हमने कितना हार्ड वर्क किया है इस ऑफिस को बनाने में एंड फाइनली बनकर रेडी है। तो गाइस, लेट्स जस्ट गो टू द निकोलॉजी, हमारा नया आशियाना, हमारा नया ठिकाना। ये एरिया फिल्म सिटी है जो कि नोएडा में है एंड निकोलॉजी का ऑफिस फिल्म सिटी में लोकेटेड है। आई ऑलवेज हैड दिस ड्रीम टू हैव एन ऑफिस इन फिल्म सिटी नोएडा एंड द ड्रीम हैज़ कम ट्रू। ये जो लेन है यहाँ मैं कई बार आई हूँ बिकॉज इसके ठीक सामने एज यू कैन सी अभी आपको दिखाएगा कि ये न्यूज़ 24 का ऑफिस है जहाँ मैं पहले काम किया करती थी। आई यूज्ड टू डू जॉब ओवर हियर एज एन एंकर एंड टुडे राइट इन फ्रंट ऑफ इट this tower, I have my own office in it, Nikology. It just feels so proud. I can't even tell you कि क्या feeling होती है. And यहाँ ऑफिस होने से I can meet my many old friends. तो काफ़ी entertainment बना रहता है. So let's just get you inside the office now. So guys, welcome to the Nikology office and ये हमारा निकोलॉजी का ऑफिस है। ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ और रिसेप्शन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑफ कोर्स सो दैट आई कुड बी अवेयर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसलिए ये डेस्क बनाया गया। बट एज यू कुड सी I have kept a very minimal decor here so that it could give me a great feel. सिंप्लिसिटी के साथ साथ मैंने ग्रीन का बहुत सारा टच दिया है। इस पूरे ऑफिस में आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा दिखेगी बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ पीस टू द माइंड एंड ऑल्सो टू द आईज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड ग्रीनरी टू योर लाइफ। Now let me show you the area wherein everyone sits. Now जब अंदर आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले इधर स्टूडियो है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बट दिस इज़ अनदर वेटिंग एरिया। पीपल कैन वेट हियर, पीपल कैन सिट हियर एंड ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये पूरा हिस्सा। इसे मैंने बहुत दिल से सजाया है गाइस because it has books so that if somebody wants to read something they could read something over here and कुछ पेंटिंग्स ऐड की हैं। वन ऑफ माई फेवरेट लीडर, इनकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी सेइंग्स हैं जो कि मैंने यहाँ लगाई है सो दैट इट कुड गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी टू द एनवायरनमेंट एंड देयर आर अनदर फ्यू डेकोर आइटम्स हियर एंड ऑफ कोर्स the greenery not to miss because this is something really important for me to be around. मेरी आंखों को बहुत ठंडक मिलती है इनसे। Now guys, as you could see, this is a whole sitting area where everyone sits. It's a Sunday, not too many people are here, but जो भी हैं उनसे मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। But you just come and see. So these are the workstations and there the Nikology team is sitting. So let me take you there first and introduce you to these guys. Hello boys and girls, how is it going? Good? Okay, so this is the Nikology team, the people I love a lot and they are the one because of whom we all are here today. So thank you so much guys. Ankit is somebody who writes my scripts. So thank you Ankit for helping me out for everything. Durgesh is there, Kartike is there. I always call him Aniket, I don't know why. I have no idea where this name has come from in my mind, but theek hai, Kartike. I corrected myself. And this is Manju. Oh no, it's Manju is here. These are the new girls that have joined the team, and this is Prachi. She writes content for us. So thank you so much, Prachi. You do really well. I have heard from Anjali, And that's Anjali sitting over there. She's our social media manager and somebody who assists me with everything that I do. Without her, I don't know what would I be like. Confused maybe. That's Vishal. He edits for us, and that's our pretty good team. So this is wherein we all sit, we work, and now let me show you another very favorite spot of mine, my makeup room. So this is my glam room, something that I cannot live without. Come, I'll take you inside.
Hello, Lucky. So that's Lucky. Lucky is the one who does my makeup, my hair, and everything. He's a great help. Somebody really good at makeup, and now I know how much lucky I am to have him. So this is my glam room, and इसको भी मैंने बहुत प्यार से बनाया है. बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी जिनका ध्यान रखा है, because ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ. You know, मेरे ऑफिस से भी ज़्यादा मैं यहाँ दिखती हूँ. Well, that reminds me of my office. Let me take you to my office, which is right next to my glam room. Come on. Well, this is my office wherein I spent a lot of time. Well, I know कि मैं glam room में ज़्यादा दिखती हूँ, but मैं यहाँ पर भी बहुत बारी दिखाई देती हूँ. This is the space I decorated on my own. Interiors and everything I kept in mind. Something that suits me, my personality, you know. When I was trying to create this office space for me, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, but the space is beautiful, so I just thought to put everything that I love in, you know, and something that just describes me and my personality. So यहाँ जितनी चीज़ें आपको दिखेंगी वो सब बताएंगे कि महर ऐसी ही है, you know, या महर ये करती है, और वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आने वाली हैं. This is my chair. Anyways, these are the items, you know, that I love a lot. These decor items, these pieces, you know. Well, I do a lot of yoga. Some time maybe, you know, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो शूट करूँगी. But it's very important, guys, to have a healthy body, a healthy mind, and what could be better than yoga? So I do yoga every day, and you should also do it. Practice as much as you can. योगा, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए. अगर आपका शरीर हेल्दी है तो ही आप एक हेल्दी माइंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे. फिर यहाँ कुछ पेंटिंग्स हैं. पेंटिंग्स बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत कुछ बताती हैं. लाइक दिस वन, दिस इज़ समथिंग वेरी क्वाइट, माई वेरी फेवरेट पीस. एंड दीज, you know, another decor items that they are, you know, that you can see here. इनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है, लगाव है. यहाँ हर एक चीज़ ऐसी है जो कि मेरे बारे में कुछ ना कुछ बता रही है. I love these a lot, you know. गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में आपने सुना होगा. I just follow, you know, this saying a lot कि आपको ना बुरा बोलना चाहिए, ना आपको बुरा सुनना चाहिए, ना आपको बुरा कहना चाहिए किसी को. So these 3 things always remind me of it. इसलिए मैंने इसे अपने ऑफिस में ज़रूर रखा है, so that मुझे ये saying ज़रूर याद रहे और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी गलत करने से पहले बचूँ. Well, another important situation that I have here in my office is this thing, you know, good vibes only. I make sure that I am only around the good vibes. I do not want any negativity around. So it's very important for me to have things which always reminds me of positivity, goodness, wellness of everyone, not just of me. So I made sure of that. This couch, another important thing, because अगर मैं थक जाऊँ अपनी चेयर पे बैठे बैठे तो couch is very important. Also मेरे कोई friends आते हैं तो उनको वहाँ बैठाया, खुद यहाँ बैठे गपशप किया. काम भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम किया है. इसलिए you know, आज इतना खूबसूरत ऑफिस है. यहाँ पर बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, और आज बहुत मेहनत के बाद ये ऑफिस आपके सामने है. निकोलॉजी एक सपना है जिसे अब मैं हर रोज़ जीती हूँ. एंड I would not say that I've achieved a lot of things in my life, but yes, जो एक लिस्ट मैंने बताई थी जिसके बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपनी एक लिस्ट ज़रूर बनाइए कि आपको क्या 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 अचीव करते जाना है, वो ज़रूर मैं कर रही हूँ दिन प्रतिदिन. एंड let's see, I just hope to grow more. But yeah, another few things which are very important for Meher is to see herself in the mirror. I am obsessed with mirrors a lot. So I had to have one mirror in my office, which is this, as you could see. Well guys, ये करीना कपूर का बड़ा ही famous सा dialogue है उनकी एक movie का, and ट्रस्ट मी, इसे मैं भी फॉलो करती हूँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ. जहाँ मिरर दिखा वहाँ मुझे अपने आप को देखना है. सो आई हैड टू हैव वन मिरर इन माई ऑफिस सो दैट मैं अपने आप को, अपनी खूबसूरती को रोज़ अप्रिशिएट करती रहूँ. एनीवेज, नाउ दिस क्लोथिंग रैक हैज़ टू हैव it's a very important thing for me. It has to be here because there are times when I'm doing multiple shoots in a day. So I just make sure that I have extra clothes already lined up for me. कभी भी कुछ भी change करना पड़ सकता है. So इसलिए ये clothing rack होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था मेरे room में. Anyways, let me show you now another important room of this office. Well, while we are walking towards that room, this rack that you see, a lot of clothes in here. I am not going to ask my cameraman Abhay
है to zoom the clothes right now because these are for my clothing brand which are going to be launched soon. So आप वहाँ से शॉपिंग करना. नाम मैं ब्रांड का भी आपको नहीं बताऊंगी, थोड़े ही दिनों में आपको पता लग जाएगा. बट गाइस, बहुत मेहनत की है मैंने इस ब्रांड के लिए और बहुत मेहनत किया है, बहुत क्रिएटिव रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपके लिए हैं. सो जब भी आता है यू मस्ट ट्राई द क्लोथ्स ऑन. Guys, this is another room which is of Aditya's. Aditya Racing. He is my partner, my brother-in-law, and a very dear friend, very close to me. So इस ऑफिस की हर एक चीज़ आपको चीख चीख के बताएगी कि ये एक लड़के का ऑफिस है. Well, I made sure that while I'm doing the decor of this office, he has everything that he needs. He is a great devotee of Shankar Bhagwan ji, and as you could see, I have made sure कि मैं उनका एक प्यारा सा पोर्ट्रेट यहाँ पर ज़रूर रखूँ आदित्य के लिए. आदित्य loves everything in black, so this office belongs to Aditya. He is my partner, as I said, in the Paper Network and for Nikology as well, and he is very hardworking. And everything in this room has been very subtle because he is a great man with a very simple mindset. So this room dedicates to him. Well, another vital and very important area of this office is the soul of this office, which is my studio. So let me take you inside the studio now. Well guys, this is the studio of Nikology. ये बहुत important place है मेरे लिए because अपना ज़्यादातर समय मैं यहाँ भी बिताती हूँ. ये जो सेट आप देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत सेट है, बहुत ही क्रिएटिव सेट है जिसे मैंने बहुत मेहनत के साथ डिज़ाइन किया है. इस सेट पर आपको हमारे निकोलॉजी के अपकमिंग शोज़ दिखने वाले हैं. अपकमिंग शो का नाम है टोटली अनअपोलोजेटिक, एंड इस शो पर आपको ऐसे चेहरे दिखेंगे जो कि अपनी स्टोरी से आपको बहुत मोटिवेट करने वाले हैं. काफ़ी मसाला और काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलने वाला है. सो कीप वॉचिंग निकोलॉजी. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि निकोलॉजी पर बहुत अच्छा कंटेंट हर रोज़ आपको मिलने वाला है. नाउ इस अच्छे शानदार सेट के बाद एक और स्पॉट है जहाँ पर हम आप देख सकते हैं 2 काउचेस रखे हुए हैं. ये 2 काउचेस हैं यहाँ पर. इस पे एक पे मैं बैठने वाली हूँ और एक पे हमारे साथ अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बैठने वाले हैं. द एंटरप्रेन्योर शो, इसकी शूटिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ. यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे चेहरे दिखेंगे, ऐसे चेहरे जिन्होंने बहुत कम समय में, आपके और मेरे जैसे ही लोग जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत नाम कमाया, बहुत पैसा कमाया, उनकी स्टोरीज मैं आप तक लेकर आऊँगी सो दैट आप और मोटिवेट हो सकें, उनकी जर्नी से बहुत कुछ सीख सकें. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक ग्रीन पर्दा है. कई बार अगर हमें क्रोमा शूट करना होता है तो हम इस पर शूट करते हैं. आपने देखा होगा कि हाँ, बहुत सारी इमेजेस वगैरह पीछे चल रही होती हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन बैकग्राउंड. बट येस, दिस होल ऑफिस इज़ my life. I live for it, I die for it, and yeah, I am very much excited for this new show, Totally Unapologetic, because it's going to have a lot of motivational, content. And I'm sure कि ये contents आपको हर रोज़ motivate ज़रूर करेंगे. इसलिए निकोलॉजी को देखते रहना आपके लिए बहुत important है. Well, 2 वजह थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी थी और पिछले 2 महीने से मैंने शूट नहीं किया. आप भी सोच रहे होंगे कि मेहर कहाँ है, शूट क्यों नहीं कर रही है. तो गाइस, पहली वजह थी इस ऑफिस को तैयार करना, जिसे कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है. बहुत दिल से, बहुत हार्डवर्क लगा, काफ़ी सालों की मेहनत थी और आज निकोलॉजी हमारे सामने है इस रूप में. इट जस्ट गिव्स मी इमेंस satisfaction, pleasure, everything, and I'm really thankful to God and myself also for giving me this opportunity and for making me realize who I am. So thank you so much, and now thanks to you guys also because आपकी वजह से भी मैं यहाँ पर हूँ. आप देखते रहिए निकोलॉजी को ऐसे ही, आप महर शेख को ऐसे ही देखते रहिए. What else I can ask for? Anyways, दूसरा रीज़न जो था जिसने मुझे काफ़ी बिजी रखा था वो ये है. As you could see, I don't think that I have to tell more about this look. Well, I'm married and that's why I was really busy from the last 1 month in it. So this was the whole beautiful large office of Nikology. Now, Nikology को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें YouTube पे फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हम सोशल मीडिया पर भी हर जगह हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर. हमें हर जगह फॉलो कीजिए अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि निकोलॉजी आपके लिए बहुत सारा मोटिवेशनल कंटेंट हर रोज़ लेकर आने वाला है. इसलिए आपको इस चैनल को ज़रूर देखना चाहिए. दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल चैनल in the country, so do not miss even a single show of it. Keep watching Nikology.